worksheet. Show that the equation log base 10 of x plus 5 equals 2 minus log base 10 of x may be written as a quadratic equation in x. Okay, so forget about quadratic equation. Let's try to solve this first. We have log, stylus मेरा चल रहा है, log 10 x plus 5 equals 2 minus log 10 x. Okay, इसको हमने simplify करना है. So how would we solve an equation which has variable on both sides? Like y is equals 5y is equals to 2 minus y. The first thing we do is bring वेरिएबल को both सेम the साइड y's. ले जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली सेम साइड पे ले जाते हैं. इसमें भी यही करेंगे. log base 10 दोनों साइड पे है, उसको एक साइड पे लाते हैं. So we will get a sum of log base 10 x plus 5 plus log base 10 x equals to 2. अब एक इक्वेशन है जिसमें log है तो डेफिनेटली log की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है. एंड वी हैव डिस्कस दिस प्रॉपर्टी ऑलरेडी कि log AB is actually equals to log A plus log B. So this is log A plus log B. This is, let's say, log A and log B is being added to it. So हम इसको merge कर देंगे into single log term और x plus 5 और x का product ले लेंगे. So हम left hand side से right से left जा रहे हैं. So log base 10 product of x plus 5 and x. So x square plus 5x equals to 2. Okay, now we have to send log base 10 to the other side. How does it go to the other side? ये दूसरी साइड पे कैसे जाएगा? 10 square. Yes. log base 10 इधर 2 की बेस बन जाएगा और 2 पावर हो जाएगी. And we have x square plus 5x at this end. So we have x square plus 5x minus 100 is equals to 0. And this is what we were supposed to show. Show that equation can be written as a quadratic equation. Okay, we're done with part 1, I suppose. Let's see. Show that this equation may be written as a quadratic equation in x. Done. Part 2, hence find the value of x satisfying this equation. So now to find that value, all that's left to do is solve the quadratic equation. Yeah, part 2. X square plus 5x minus 100. Factorization से हो सकता है? नो मैम. तो quadratic formula यूज करना पड़ेगा. So minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. What are the two values we're getting? -7.807 and -12.807. -12.807 and 7.807. Okay. Just like modulus function, whenever you get the answer, you substitute it back in the original expression to check whether it's a valid solution or not. तो अगर x 7.807 हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं होगी log के अंदर. नहीं. X plus 5 will still be a positive value and x already is a positive value 7.807. Now let's check minus 12.807. अगर x नेगेटिव है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी log के अंदर वाली टर्म x plus 10 और ये भी log की इनपुट नेगेटिव हो जाएगी and it can never be negative. You can only take log or natural log of a positive value.
So that means the right solution has to be ignored or not possible. इधर रख दें. And this is the only answer. All right, moving on to question number 2. So show that if y is equals to 2 power x, then the equation 2 power x minus 2 power minus x can be written as a quadratic equation in terms of y. So we have to replace 2 power x with y. So part 1, 2 power x minus 2 power minus x equals 1. 2 power x is y minus 2 power minus x. कैसे लिखें in terms of y? I'm sure most of you know this. बताओ मुझे, how do we write 2 power minus x in terms of y? Y minus 1. Excellent. Y power minus 1. ठीक है, this becomes y power minus 1. क्योंकि अगर 2x whole power minus 1 भी तो लिख सकते हैं ना इसको. यूं भी कर सकते हैं. So that's going to be y power minus 1. Another way of understanding this is that you can rewrite this equation like this. 2 power x minus 1 over 2 power x is equals to 1. So you get y minus 1 by y equals 1. Okay, now we know how to handle this equation. So y square minus 1 equals y. So y square minus y minus 1 is equals to 0. So that is the quadratic equation. Let me check. Right. Okay, part 2. Hence solve this equation. So we solve the quadratic equation using quadratic formula. Minus b would be plus 1 plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. So that would give y equals 1.6180. मैंने लिखा हुआ है, ये चेक करना, पता नहीं कब का लिखा हुआ है. And the other one is minus 0.61. यही है? Okay. जी. So we have to solve the given equation और उसका variable x है. So you need to find the value of x. So replace y with 2 power x again. So we're getting 2 power x equals 1.6180 and y 2 power x equals minus 0.61. We have a power, a variable in the power. So how do we solve questions like this? Natural log. हाँ, या तो natural log on both side और directly क्या कर सकते हैं single step में take 2 to the other side. 2 जब दूसरी side पे जाता है तो वो बन जाता है log base 2. ठीक है, अब जिस method से भी करना है कर लो. I think I'm going to use the direct method. I will not take log on both sides. I will directly take 2 to the other side. So x is equals to log base 2 1.6180 और इसका आंसर है 0.694. And for the second solution,
we will get, for the second equation, we'll get no solution. Because when you send 2 to the other side, it becomes log base 2 of a negative number. So not possible. There are no solutions. Okay, even when you try to take natural log on both sides, you can't take natural log of a negative number. Okay, so that's question number 2. Any questions so far? Question 3. Given that x equals 4 3 power minus y, express y in terms of x. Okay. Y को हमने subject बनाना है. What should be the first step? Divide x by 4. Divide x by 4, that would work. Y दूसरी साइड में ले जाएगा वैसे नहीं तो y को दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं. नहीं, मतलब 3 पावर y को दूसरी साइड में, क्योंकि लेके पहले जा सकते हैं. डिवाइड हो रही है. ठीक है, पहले 3 पावर y को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो वो 3 पावर पॉजिटिव y हो जाएगा. और फिर 3y को उधर ले जाते हैं और x को नीचे ले आते हैं. That would also work. So I'll do what Heather said. X equals 4 over 3 power y, and then 3 power y equals 4 over x. Okay. Now what do we do? Express y in terms मैम of जैसे x के साथ ही अब 3y डाल दी और उसके बाद फिर दोनों साइड में log नेचुरल से फिर डिवाइड कर दी थी, आई मीन ब्रेकअप कर दी थी उसको, x और 3y को, जिससे फिर एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. So are you telling me to take log on both sides? नहीं मैम, आफ्टर लाइक पुटिंग 3 power y with x you can take log on both sides. मतलब 3 पावर y टाइम्स x का log ले ले. यस मैम, दोनों साइड में log से उसके बाद फिर log नेचुरल 3y प्लस log नेचुरल x इज इक्वल टू log नेचुरल 4 हो जाएगा. ओके, थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा. होल्ड ऑन, मैं करके देखते हैं जो आप कह रहे हो. आप कह रहे हो x पावर 3y इक्वल्स 4 कर लिया. अब log ऑन बोथ साइड ले लिया. ln x टाइम्स 3 पावर y इक्वल्स ln 4. उसके बाद डोंट कॉपी दिस हियर प्लीज. ln x प्लस ln 3y इक्वल्स ln 4. अब ln x को दूसरी साइड पे कर देते हैं. तो यहाँ आ y गया नीचे आ जाएगा. y, हाँ ln 3 और फिर इससे ln 3. हाँ बिल्कुल ठीक है, 100% बिल्कुल ठीक है. सही है ये मेथड. ओके, मैं सोच रही थी कि मैं इधर log ले लूँ, तो that would give us exactly the same result. I'm going to take log here. तो ये आ गया ln 3 पावर y को मैं नीचे ला रही हूँ, इज इक्वल्स टू ln 4 डिवाइडेड बाय x. और डिवीजन का रूल क्या होता है? ln a अपॉन b होता है ln a माइनस ln b. ln a divided by b is ln a minus ln b. So we get ln 4 minus ln 6 upon ln 3, exactly what Heather said. एक और तरह से भी ये मेरे ख्याल में हो सकता है. Let me clear this side. You're supposed to make x the subject. So यहाँ तक हम आ गए. फर्स्ट स्टेप हमारा ये था. सेकेंड स्टेप में we can directly take 3 to the other side. How do we directly take 3 to the other side? Log base 3. इससे ये भी आंसर सही होना चाहिए. y is equals to log base 3 4 upon x. और इसको अगर एक स्टेप और करना है, वैसे जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव आइसोलेटेड y, यू हैव मेड y द सब्जेक्ट. ये भी कर सकते हैं log 3y माइनस log base 3x. ये इक्विवेलेंट आंसर्स हैं. ये भी इक्विवेलेंट आंसर्स हैं. ओके, क्वेश्चन 4.
Solve correct to three significant figure the equation e power x plus e power 2x is equals to e power 3x. Okay. ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? You have x plus x square is equals to x cubed. Polynomial equation है. A wrong way of doing it is you take x common here और यहाँ लिख लिया 1 plus x और यहाँ आ गया x cube और फिर इसको और इस पावर को 1 लेस कर दिया 1 plus x equals x square. This is a wrong way of doing it. You get a quadratic इस साइड equation. पे लाके फिर x कॉमन ले लेंगे। हाँ एग्जैक्टली इससे आप एक सोल्यूशन लूज कर रहे हो अगर आप दोनों साइड्स के x को कट कर रहे हो you're losing one of the solutions. This should give you ideally three solutions. So instead what you'll do, you'll bring all the values to the same side, then you take x common. तो एक x is equals to 0 आ जाता है, so you retain the third solution as well. So that's what we'll do here as well. We have e power 3x minus e power 2x minus e power x is equals to 0. हमने e power x common नहीं लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, हम सबको एक साइड पे ले आए. Now we're going to take ex common. So we get e power 2x minus e power x minus 1 is equals to 0. So we're getting e power x is equals to 0 and we're getting e power 2x minus e power x minus 1 is equals to 0. How does e go to the other side? Natural log of 0. Natural log of 0. And what is natural log of 0? Or log 0? कुछ भी नहीं होगा, एरर हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लॉग की जो हमने परसों पढ़ी थी कि इफ इट इज लॉग बेस ए ऑफ बी तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता और 0 भी नहीं होता. b is greater than 0. ये हमने पढ़ा हुआ. Even if you try it in your calculator, you will get math error. So either you directly write no solution और graphically अगर मैं इस बात को प्रूव करूं तो e पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसका x एक्सिस जो होता है वो एसिम्प्टोट होता है और वो यूं करके राइज करता है और यहाँ 1 वैल्यू होती है. तो इस ग्राफ की कौन सी x की वैल्यू पे 0 वैल्यू आ रही है? कभी भी नहीं आ रही बिकॉज इट्स नेवर टचिंग दिस 0 लाइन. इधर है ना 0 वैल्यू, इसकी तो कभी 0 वैल्यू हो ही नहीं रही e पावर x की. सो दैट इज व्हाई e पावर x इक्वल्स टू 0 हैज नो सोल्यूशन. So either you directly write no solution here or you write x is equals to ln 0, no solution. वैसे पहले ही लिख लेना चाहिए क्योंकि इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. No solution. Okay, moving on to the equation on the right hand side. What is this? How do we solve this? You have solved equations like this in AS. बस उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं होता था. ई पावर x को अगर हम वेरिएबल के तौर पे ले लें, e पावर x को हम y ले लेते हैं तो ये हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. हमने हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं AS में. सो यू कैन राइट लेट e पावर x equals y. So you're getting y square minus y minus 1 is equals to 0. Quadratic formula minus 1 plus minus 1 whole square or 1 square minus 4ac upon 2a. What do we get? (1.618) and y equals negative 0.816180. Replace y with e power x. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
take e to the other side. When e goes to the other side, it becomes ln. And when ln goes to the other side, it becomes e. So ln 1.6180 ज़्यादा लंबा तरीका and take natural log on both sides. So x equals natural log 1.6180, that is 0.481 in three significant figures. और यहाँ पे आ गया e power x is equals to minus 0.618 and directly you should write no solution क्योंकि exponential function कभी negative नहीं होता. This was question 4. 0.481 is the only solution. Okay. Next question. Question 5. Okay, let's start with part 1. ln bracket x plus e power minus x equals 2. Solve this equation giving answer correct to 2 decimals. So, what should be the first step? अदन आप मुझे बता सकते हो? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्विंग का मतलब है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. ln दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो e बन जाएगा. बिल्कुल. सबसे पहले यहाँ से ln हटेगा, it goes to the other side, it becomes e power 2. So we have 2 plus e power minus x is equals to e square. What should be the next step? मैम इसको रीअरेंज कर देंगे और वो हिडन क्वाड्रेटिक्स है. नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं. ये पता है क्या है? अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं तो ये बन रहा है 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर. एक कांस्टेंट है, लेट्स से 3.2. वैसे यस. तो अब इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना. इसी तरह कर लेंगे. हाँ, ई स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे. बिल्कुल. E square is a constant. You can find its value from your calculator. E pi होता है. Pi की तरह की एक वैल्यू होती है. ठीक है. जिस तरह pi is a constant, E is a constant. So E minus 2 is another constant. So you keep the x term here and you move both the constants to the same side. Now E minus 2, sorry, वो E square. हाँ, यहाँ E square and this is also E square. E square minus 2 is a constant. Next, we take this e to the other side. And this becomes ln. So we have minus x is equals to ln bracket e square minus 2. Right hand side is still a constant. And then send minus to the other side. We have minus ln bracket e square minus 2. And enter this in your calculator. Minus ln अल्फा और पाई प्रेस करके ई आता है. प्रेस अल्फा की एंड देन पाई. सो ई स्क्वायर माइनस 2 is equals to minus 1.68. 437. Write a long answer before you round it off to 2 decimal place का question is. We have to be very careful about this. 3 significant figure पे ऐसा वही बात होगी 2dp और 3 significant figure in this particular question. However, it's not always the case के दोनों same होगा. So just be very careful about this कि कौन सी degree of accuracy required है question में. इसका 1 mark होता है. Okay, so this was question 1. Let me check the answer. Minus 1.68. Okay, I'm going to clear this and then we'll do the second.
log x minus 8 is equals to log 9 over 2 is equals to log x by 4 plus 1. Constant terms इधर कौन सी और वेरिएबल टर्म्स कौन सी? कांस्टेंट होगी log 9/2 और 1, बाकी बिल्कुल दोनों वेरिएबल। हाँ, इनको तो वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, सो log x minus 8 minus log x by 4 is equals to, again there's no one fixed way of solving this question. जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, काफी तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। कुछ बच्चे एलसीएम ले लेते हैं, कुछ बच्चे पहले शफल कर लेते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। सो देयर इज नो वन फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है? मैम पहले लेफ्ट साइड वाले को कंबाइन कर ले, फिर राइट साइड वाले को कंबाइन कर ले। ठीक है, राइट साइड को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड को हम कैलकुलेटर में डालेंगे और वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड कांस्टेंट है। ठीक है, उस पर हम फर्दर प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई करेंगे अनलेस इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दे। फिर हम डेसिमल वैल्यूज नहीं यूज कर सकते, फिर हमें सोचना पड़ता है कि आगे क्या करेंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको भी प्रॉब्ली 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना होगा या 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट simplifying the right hand side. Left hand side को however we'll simplify using log a minus log b. किसके इक्वल होता है log a minus log b? log a over log b. नहीं, not log a over log b, log log ब्रैकेट a अपॉन b। ठीक है, ओके, तो हम यही कर लेते हैं, लॉग कॉमन ले लेते हैं, एल जी इज स्टिल लॉग, और न्यूमरेटर में x माइनस 8 और डिनोमिनेटर में x बाय 4, ये आ गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज अ फ्रैक्शन, आई मीन द डेसिमल 1 माइनस लॉग 4.5, that is 0.34678748, जितना बड़ा आंसर लिख सकेंगे हम लिखेंगे। अच्छा, I'm going to simplify the left hand side a bit further. जो further denominator में 4 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, so we have 4x minus 32 divided by x equals this value 0.3467 dot 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 dot. अब log दूसरी साइड पे किस तरह जाएगा? टेन पावर ये जो नंबर है 0.3467 इज इक्वल टू 4x minus 32 over x। ठीक है, 4x minus 32 over x equals 10 पावर आंसर। अब इस क्वेश्चन में ना आंसर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर आप बार बार आंसर नहीं प्रेस करोगे यू विल कीप लूजिंग एक्यूरेसी इन एवरी स्टेप। तो रिमेंबर टू यूज आंसर की all the way through. So 10 power answer, 10 power answer is 20 over 9। तो एग्जैक्ट वैल्यू आई है। अगर आप इसको स्लाइटली जरा सा भी राउंड ऑफ करते तो आपकी डिफरेंट वैल्यू आती। सो आई एम गेटिंग अ वेरी नीट 20 over 9, and now we can cross multiply. So we have 36x minus 32 into 9 is 288 is equals to 20x. So we have 16x equals 288, and we have x is equals to 288 divided by 16, exactly 18 आंसर आ रहा है। अगर आप अपना आंसर लिखते हो ना 17.91 या whatever, you will lose at least 2 marks। एंड के जो एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं वो लूज होते जाएंगे। आखिर में 2 स्टेप्स के साथ लिखा होगा A1 सो यू लूज दो। मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 18 ही आ रहा है ना? यस। हाँ तो ठीक है, आ रहा है ना, क्योंकि यू मस्ट हैव यूज्ड आंसर की, या आपने इसको सिंप्लीफाई किया है खुद।
सिंप्लीफाई किए बस ठीक है, as long as you're getting 18 and not 17.9 something as your final answer, you're good. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, वेरिएबल्स टर्म एक साइड पे कर दी थी, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे कर ली थी, और फिर लॉग का रूल यूज किया, और कांस्टेंट साइड्स को हमने आज डेसिमल ले लिया, लेकिन हमने थ्रू आउट आंसर की यूज की ताकि हमारी एक्यूरेसी ना लूज। ओके, लेट्स डू पार्ट ओके 3। मैम so जी, part 3 we have log LG is still log base 10, 1 minus 2x minus 2 log x equals 1 minus log 2 minus 5x। अच्छा जी, क्या करें? क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? कांस्टेंट क्या है? खाली 1 है, 1 को राइट साइड पे रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज वेरिएबल है, इकट्ठा एक साइड पे ले आते हैं ताकि हम लॉग का कोई रूल अप्लाई करके सारी लॉग टर्म्स को मर्ज कर देंगे। माइनस, हाउ कैन आई अप्लाई लॉग रूल है? इधर एक लॉग रूल अप्लाई हुआ log है। x हाँ, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऑपोजिट रूल अप्लाई किया। यूजली हम पावर नीचे ला रहे होते हैं, लेकिन इस केस में हम पावर ऊपर लाए हैं, इसको अभी डिस्कस करते हैं। प्लस लॉग 2 माइनस 5x इक्वल्स 1। अच्छा जी, क्यों ऊपर लेके गए हैं हम पावर को और नीचे नहीं रखा? क्योंकि नाउ वी आर गेटिंग लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस लॉग सी। हाउ डू वी मर्ज दिस? लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस लॉग सी कैसे मर्ज हो? log AC over B यस, लॉग कॉमन हो गया, जो वैल्यूज ऐड हो रही है ना जिनसे पहले प्लस है, दे गेट मल्टीप्लाइड, दैट्स ए एंड सी, and the one which has negative before it that gets divided. ये दोनों rules इकट्ठे merge कर रहे थे। The one is log AB gives log A plus log B, and the other one is log A divided by B that gives log A minus log B. So हम opposite direction में जा रहे हैं. So we're kind of using this in the opposite direction. If you have A, B, and C, so when you expand this, you get log A plus log B minus log C. So this is what we're doing. Okay. So I'm going to write the positive terms in the numerator, 1 minus 2x times 2 minus 5x, and divided by x square equals 1. LG goes to the other side and becomes what? 10 to the power हाँ, क्योंकि log जब खाली लिखा हुआ है तो उसकी base 10 है. It's not being shown, but it's there. So when just log goes to the other side, it becomes 10. So we have 10 power 1, 10 power 1 here, and here we have 1 minus 2x times 2 minus 5x upon x squared. I'm going to expand the numerator simultaneously. So we have 2 minus 5x minus 4x plus 10x squared.
Let me double check. 2 minus 5x plus minus 4x plus 10x squared. Okay, rearrange. So 2 minus 9x plus 10x squared equals 10x squared. So the square terms cancels out. So we have 2 is equals to 9x. So x is equals to 2 by 9. Okay. Okay. Let me know when you're done copying. I would end this lesson and end this session and send you a new link. Question number 6. Show that the equation log base 2 of x plus 5 equals 5 minus log base 2x can be written as quadratic equation in x. हमने पहले तो नहीं किया. Let me quickly check. No, we haven't. We've done a similar question 1, but not exactly this one. Okay. So, Marine, what do you think the first step should be? We take log x to the power 2 to the left hand side. Okay. So I'm going to do that here. Plus log base 2x. Both these are log terms with variables in it. So it's only smart to move them both to the same side. Okay. Now, which property do we apply here, Mary? To merge both of these log terms into a single log term. We take log 2 common and multiply x plus 5 and x. Very good. Yes. And that property is log A plus log B. चलो जी stylus भी फाइल हो गया. एक second. Plus log B equals log AB. So we have log base 2 bracket product of x plus 5 and x equals 5. Next step, Mary. We take log 2 to the other side, which will be 2 power 5. Very good. Would be 2 power 5 and x square plus 5x. 2 power 5 32 होता है ना. X square plus 5x minus 32 equals to 0. Or yeah, we've done part 1. We were supposed to show that we get a quadratic equation. That's right. X square plus 5x minus 32 equals 0 is the correct answer. Okay, part 2. Hence, solve this equation. So we solve the quadratic equation. We get 2 values of x. One of them will probably be negative, and that can't be our solution because that would make log base 2 x, the x negative, and that does not have any solution. So for part 2, we solve this. Going to directly apply the quadratic formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. What two values do we get? 3.68 and negative 8.68. So no solution and or not possible और इसके साथ only.
7 कर लेते हैं and then we'll call it a day. Okay, can you guys try doing this on your own? And tell me if you're able to do it, and especially tell me if you're not able to do it. Going to write the final answer here. X equals 0.58. मैम आ गया आंसर। ठीक है हैदर, आप जा सकते हो। होमवर्क में मैसेज कर मैम देते। अल्लाह हाफिज। Ma'am, बताओ मेरी। ma'am, when we take log natural to the other side, तो वो वहाँ जाके e बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, you're taking all of ln x to the other side, so it just becomes minus ln x. ठीक है, you're not breaking it down, खाली ये ln नहीं लेके जा रहे दूसरी साइड पे। ठीक है, जी वो ये मैम, वाला केस होता है। देखो अगर ये होता ना ln x इज इक्वल्स टू लेट्स से सम वैल्यू है 7, तो अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना था और आप खाली इस ln को दूसरी साइड पे लेके जा रहे हो। When you're breaking ln and x, so that ln goes to the other side and becomes e power 7. But when you take the entire ln x to the other side, तो उसका बस साइन चेंज होता है। So when you're moving the right ln x to the left hand side, it just becomes negative ln x. So it's minus ln x equals to 1. Okay, we did not break the ln in x. Possible भी नहीं था break करना क्योंकि 7 plus 1 भी था. Now you merge these into a single log term and you divide the values, because the rule is ln a minus ln b is equals to ln a by b. So we have 1 plus x in the numerator and x in the denominator equals 1. Now you're only sending this ln to the other side. And when it goes to the other side, it becomes e. E power 1 is just e. So send x to the other side. So we have 1 plus x is equals to ex. Now ex is just like 3x or 1x or 2x. So हम left वाले x को भी right hand side पे लेके जाते हैं. 1 is equals to ex minus x. X can be factorized here. E minus 1. E minus 1 is just a constant value. E is a constant, so e minus 1 is also a constant. 1 over e minus 1 should give you this answer, 0.58. Fraction 1 over alpha pi is e minus 1 gives 0.5819, which you first write till at least 4 decimal place, and then you round it off to two significant figures, 0.58. The first answer should be a long answer, 0.581976, and x equals 0.58. That's all for today. When you're done, you can leave. Allah Hafiz. Allah Hafiz.